अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिपस कॉम्प्लेक्स इन सन्स एंड लवर्स, जो कि डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एडिपस कॉम्प्लेक्स किस तरह एक्सप्लोर किया गया है। सबसे पहले हम एडिपस को समझ लेते हैं कि एडिपस कॉम्प्लेक्स होता क्या है। द एडिपस कॉम्प्लेक्स इज अ साइको एनालिटिकल कॉन्सेप्ट introduced by Sigmund Freud that describes a child's unconscious sexual desire for the parent. Parent means father or mother of opposite sex, along with feeling of rivalry toward the parent of the same sex. ये कि इसको सिगमंड फ्राइड ने वो किया है, इंट्रोड्यूस किया है। उसने बताया है कि चाइल्ड की जो अनकॉन्शियस होते, चाइल्ड मीन मेल या फीमेल, उसकी जो अनकॉन्शियस जो कि इसके इख्तियार में नहीं होता, सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं फॉर द पेरेंट। अगर मेल है तो वो अपनी मदर की तरफ वो होगा, अट्रैक्ट होगा। अगर चाइल्ड जो है वो फीमेल है तो वो अपने फादर की तरफ वो होगी, माइल होगी। तो ये अपोजिट जेंडर रिलेशनशिप है। along with feeling of rivalry, और वो इसको दुश्मनी का नाम देता है, जो कि मेल और फादर यानी कि बाप बेटे में जो वो रिलेशन होता है वो इसको दुश्मनी। जिस तरह एक मकनातीस होती है वो सेम पोल वाले जो होते हैं। अगर आप मकनातीस को देखें तो अगर दो उसके दो पोल होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। सेम चार्जेस वाले जो होते हैं, अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव उसके साथ लाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर वो हो एक मेल हो एक फीमेल हो तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सेम उस तरह इसने वो कंसेप्ट अपना दिया है। द कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड आफ्टर द myth of Oedipus, who unwillingly fulfilled a prophecy that he would kill his father and marry his mother. तो इसलिए इस कंसेप्ट को जो है एडिपस का नाम भी दिया गया है। एडिपस कॉम्प्लेक्स इन सन्स एंड लवर्स, जो कि हमारी हेडिंग है आज के टॉपिक की भी। एडिपस कॉम्प्लेक्स इन सन्स एंड लवर्स, लॉरेंस novels explores the concept of Oedipus complex. It explores the complex relationship between a mother and her two sons. In Sons and Lovers, the Oedipus complex is evident in the relationship between the protagonist Paul and his mother. नेक्स्ट फीचर हमारे पास है द अनहैप्पी लाइफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मॉरल। गेट्रूड मॉरल गेट मैरिज विद वॉल्टर। एट फर्स्ट दे हैड अ वेरी हैप्पी लाइफ। शुरू में उनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी मैरिज के बाद। बट स्लोली लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मिसेस मॉरल began to feel frustrated with her husband's illogical way of life. Their endless quarrels denied Mr. Moral and he becomes a terror to children. नेक्स्ट फीचर हमारे पास है एडिपस कॉम्प्लेक्स इन विलियम। Unhappy with her marriage, Mrs. Moral first turned to William, who has the center of her affection. As a boy, William came to the fair and was very excited and fitted his mother the egg cups as a lover. This incident influenced his emotional development and he mysteriously went against his own father. As a result, William suffers from terrible spiritual agony and eventually dies. नेक्स्ट फीचर हमारे पास है पॉल्स क्लोज रिलेशनशिप विद हिज मदर। तो असल में जो इस नावल में इडिपस कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर किया गया है वो यही दो करेक्टर हैं, जो पॉल है और उसकी जो माँ है। थ्रू आउट द नावल पॉल हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद हिज मदर। उसके जो माँ के साथ जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा क्लोज था। दे आर इमोशनली रिप्रेजेंट डिपेंडेंट इन ईच अदर। Paul is described as feeling so warmth
and tender toward his mother, and so grateful for her love and care. This suggests that he has a strong emotional attachment to his mother and depend on her support. Here are some lines that shows Oedipus complex elements. यहाँ पर कुछ लाइंस हैं जो कि नावल से लिए गई हैं, हम उनको देखते हैं. He wanted her to rouse up and be what she had been when he was a child, when she had an incomparable worth and richness to life. These lines shows Paul's desire for his mother when he was a child. नेक्स्ट फीचर हमारे पास है पॉल्स रिवेलरी विथ हिज फादर. रिवेलरी जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिगमंड फ्राइड इसको दुश्मनी का नाम देता है जो कि सेम जेंडर में पाया जाता है. In addition to his close relationship with his mother, Paul also has a fraught relationship with his father, Walter. When Paul's father is ill and Paul's mother is nursing him, Paul is jealous of his father and wants his mother attention for himself. जब उसका बाप बीमार पड़ जाता है तो माँ उसकी खिदमत करती है, तो ये इसको जेलसी होती है कि क्यों वो उसकी खिदमत कर रही है और वो उसकी अटेंशन जो है अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहता है. Paul also views his father as a rival for his mother affection, which is a hallmark of Oedipus complex. वो इसको अपना राइवल भी समझ रहा है अपने फादर को. Paul wishes for his father's death in the novel. पाल की जो ख्वाहिशात हैं कि वो कहता है कि मेरा नावल में कि वो कहता है कि मेरा बाप जो है जल्द अज जल्द वो मर जाए. लॉर्ड इट वुड बी बेटर दैट माय फादर डाइज. यही उसके अल्फाज हैं जो जिससे साफ वाज़ेह हो रहा है कि वो अपने बाप की मौत का ख्वाहिशमंद है. नेक्स्ट फीचर हमारे पास है पॉल्स रिलेशनशिप विद अदर वुमेन. दूसरी औरतों के साथ उसके रिलेशनशिप किस तरह थे. The Oedipus complex is also evident in Paul's relationship with other women. He has difficulty forming intimate relationship with women because he is unconsciously comparing them to his mother. For example, when Paul becomes involved with Miriam, he is unable to fully commit to her because he feels guilty about betraying his mother emotional hold on him. Similarly, when Paul becomes involved with Clara, ये एक another वो है woman है, he is still thinking of his mother and unable to let go of their emotional bond. नेक्स्ट फीचर हमारे पास है मिसेस मॉरल स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ पॉल्स फ्रेंडशिप विद अदर वुमेन women. When Paul fell in love with Miriam, his mother felt display hurt. Oedipus complex जो है वो एक पाल की तरफ से नहीं दिखाया गया बल्कि उसकी मदर भी उसकी तरफ अट्रैक्टिव थी क्योंकि उसका जो मिसेस मॉरल है वो इसको स्ट्रांगली डिसलाइक करती है पाल का जो रिलेशनशिप है अनदर वीमेन के साथ. Mrs. Murrell disapproves of Paul's friendship with Miriam and tries to prevent him from spending time with her. This shows her love for Paul. ये उसके पाल की तरफ से प्यार दिखाया गया है. नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास है Paul's struggle to form meaning relationship. As Paul grew up, he struggled to form a relationship with women that do not inherit the intense emotional connector he has with his mother. This is also another evidence of Oedipus complex that when a young man is unconsciously seeking to explore, replace his father and win his mother. Conclude कर लेते हैं. In Sons and Lovers, D.H. Lawrence portrays the Oedipus complex through the character of Paul Morrell. His intense relationship with his mother and rivalry with his father reflect the psychoanalytical theory derived by Freud.
Paul's relationship with other women also demonstrate his desire to replicate his mother's mm, nurturing and affectionate nature. Lawrence uses vivid and often sensual language to describe the complex relationship between the characters, and the novel is a powerful exploration of the subconscious desires and conflict that derive human behavior. तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को वो कर दें, लाइक भी कर दें इस वीडियो को, ताकि मेरी हर इस किस्म की आने वाली वीडियो आप तक बआसानी एक्सेस कर सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।